जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यस्तो तरसत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यस्तो तरसत श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ब्रह्मचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई यमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, शीला प्रभुपाद ट्रांसजनरल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Guru, Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. You have something I can use as paperweight? करताल नहीं यूज करना चाहिए उसके लिए, कुछ और है तो कैन यूज माई मोबाइल फोन, किसी और का मोबाइल फोन दे दो तो हो जाएगा। ओके, नेक्टर ऑफ
इंस्ट्रक्शन। वर्स नंबर 3। वर्स नंबर 1 में क्या बोला गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु हैज रिटन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन? Srila Rupa Goswami. And Rupa Goswami wrote this how many years ago? Mahaprabhu came how many years ago? 500. So around about that time, 500 years ago. Where did Rupa Goswami write Nectar of Instruction? भिवंडी और कल्याण। कहाँ लिखा? Vrindavan. Very good. They are the 6 Goswamis are called the 6 Goswamis of Vrindavan. So they wrote in Vrindavan. Chaitanya Mahaprabhu had told them that you stay in Vrindavan and you rediscover all the places of Krishna's pastimes. How many years ago did Krishna come? 5000. तो वो 5000 years में क्या हो गया कि सारे places lost हो गए वृंदावन के। Like even now, if sometimes you go somewhere, if you have your grandfather or grandmother, and even though they may be from Kalyan or from Mumbai or from wherever, they will say, बेटा पूरा अभी तो सब रास्ते बदल गए हैं। चेंज होता है ना, थिंग्स चेंज। पहले जितना मुंबई था अभी मुंबई और बढ़ गया है। तो सिमिलरली वृंदावन completely was different. सब everything was just forests. All the places, Yashoda, Nand Baba's palace, everything was lost. So Chaitanya Mahaprabhu came and rediscovered all those places, and then he told the Goswamis to discover more places and then write literature explaining the essential principles of Bhagavad Gita and Bhagavatam. Now, Bhagavad Gita has how many verses? 700. Srimad Bhagavatam has how many verses? 18,000. 18,000. Nectar of Instruction has how many verses? 11 verses. 11 verses. तो 18,700, चलो 700, चलो फिर भी सोच सकते चलो ये लाइफ में एटलीस्ट हम पढ़ेंगे 700 श्लोक। 18,000 तो पता नहीं लाइफ में पढ़ेंगे भी नहीं कि नहीं, पर 700 भी नहीं। बट व्हेन समवन सेज 11, साइज ऑफ द बुक, छोटा सा बुक है, पेजेस भी कम है। कितने पेजेस हैं? देखो लास्ट पेज कितना है, नंबर 96। वो भी 96 पेजेस प्रॉपर साइज बुक के नहीं है, छोटे बुक के। तो व्यक्ति क्या सोचेगा? पढ़ सकते हैं, वी कैन रीड। व्हेन वी आर टोल्ड 11 वर्सेस में वॉट एवर यू, चलो what kind of instructions do you think are there in this book? It's saying nectar of instruction. What kind of instructions are there? Instructions for what? To grow in bhakti. Very good. What we should avoid in bhakti? How to grow in bhakti? Anything else? What would be the these are main instructions. What other instructions? Yes, Mahaprabhu. Awakening our dormant. So everyone has Krishna consciousness and we have to awaken. So these are the instructions that are there. Now if someone tells you 11 instructions है, ये 11 instructions हम follow करेंगे तो हमारा भक्ति ग्रो होगा, हम माया से बचे रहेंगे और हम अच्छा सेवा कर पाएंगे। और सिर्फ 11 इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। व्हाट विल अ पर्सन थिंक देन? मैनेजेबल है, कर सकते हैं, पॉसिबल है, डूएबल है, राइट? यस। सो देयरफॉर रूपा गोस्वामी व्हाट ही हैज डन इज he has taken the principles of the scriptures of Bhagavatam, of Bhagavad Gita, and made it into concise form of what a practicing devotee should take care of. If you see, the first verse was Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jiva Vegam, Udaropastha Vegam, all about how to control the senses. The last verse is about residing in Radha Kund, and Radha Kund being the topmost place in the spiritual world. First verse बोलता है senses control करो. Last verse is talking about the topmost place in the spiritual world. What do you think is there in the between? इन दोनों के बीच में क्या है?
The path to go from sense control to achieving the highest. So basically, to achieve the highest thing, the first thing we have to do is sense control. Then second verse which you all discussed is the 6 things we are supposed to avoid. प्रजल्प, नियमाग्रह, क्या है वो, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यम च सद्भिर्भक्ति विनश्यति. These 6 things will destroy devotion. What are the 6 things? First is atyahar, overeating or over accumulating, over endeavor. Atyahar, prayas. Prayas means over endeavoring, not just endeavor, over endeavoring. Extra प्रयास करना अच्छा नहीं है. Then third is प्रजल्प, मतलब unnecessary talks, mundane talks. प्रभुपाद क्या एग्जाम्पल देते हैं? रोकिंग ऑफ द फ्रॉग. फ्रॉग जब ज्यादा करता है तो कौन सुनता है? सांप. व्हाट इज स्नेक कंपेयर टू हियर? हम जितना ज़्यादा मंडेन टॉक्स करेंगे, जितना ज़्यादा मंडेन डिजायर्स रखेंगे, उतना ही माया. फिर आओ चलो, हमारा मन बह जाएगा, हम विचलित हो जाएंगे. वील गेट इल्यूजन, वील गेट कंफ्यूज्ड. वी मे थिंक नो आई एम जेन्युइन, बट देन वी गेट उत्साह, निष्ठा, सॉरी, प्रजल्प एंड देन नियमाग्रह. एंड Prabhupada defines this as niyamagraha 2 ways. Sorry? Need to. So in this verse, it was that either not following any rules and regulations or following it just out of a sense of rigidness. Just कि करना है तो कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं हम समझ नहीं रहे हैं. जैसे people, so many people, there's a nice story in this regard. There was once a wedding. उठ जाओ, नींद आ रही है तो वहाँ जाके थोड़ा ऐसे ऐसे करो तो नींद फिर जाएगी. नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. नहीं तो थोड़ा जाके पानी लगा के आओ आंखों में अगर नींद आ रही है तो. तो देयर वाज वंस अ वेडिंग. सो इन दैट वेडिंग, ब्राइड, ग्रूम, एवरीथिंग, सब कुछ चल रहा है. सडनली वो घर में बगल वाले घर की एक बिल्ली आ गई अंदर. अभी सब लोग सोचे बिल्ली आई है, बिल्ली को क्या करें. So someone just had a bright idea. They didn't want people to see, because usually animals are considered unclean. So why should an animal come? ये विवाह मंडप है, ये वो, लोग क्या सोचेंगे. भगाने का ट्राई करेंगे तो क्या होगा? यूजुअली आप कोई एनिमल को भगाओगे तो क्या होता है? या हम वहाँ भागते हैं, हल्ला मचाते हैं. एक्सपीरियंस नहीं है ना? बोलो ना. So one of the persons, what they decided to do is, one of the elders, he took a basket. बास्केट है ना, कपड़े का बास्केट होता है अपना. लिड निकाल दिया और वो बिल्ली के ऊपर रख दिया और वो बास्केट को साइड में कर दिया. तो बेचारी बिल्ली बास्केट के अंदर ही रहेगी, कुछ कर नहीं सकती. तो कैट इज इन द बास्केट. वेडिंग हो गया, सब कुछ हो गया, कैट को बास्केट से निकाला, छोड़ दिया. नाउ दिस कपल, मैरिज हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अभी बच्चे की शादी है, सब अरेंजमेंट्स हो गया, सब कुछ है. तो वो जो मदर है जिसकी शादी थी, ये जो स्टोरी, शी सेड, अरे अरे अरे, वेट वेट, वन थिंग इज मिसिंग. क्या? नहीं, हमारे में ट्रेडिशन है कि शादी के टाइम पे एक बिल्ली को लाते हैं और उसके ऊपर बास्केट रख देते हैं, और वो होना ही चाहिए. रूल्स है, ये हमारे परंपरा है हमारी. अभी उसके ऊपर बाकी सब बुजुर्ग लोग चले गए, तो और यही सबसे अथॉरिटी है, ट्रेडिशन बन गया. फिर उसके बाद वो फैमिली में जब भी शादी होती थी, एक बिल्ली को लाते थे और उसके ऊपर बास्केट रख देते थे. नोबडी आस्क्ड इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों किया था. अभी क्यों किया था? करना नहीं था, अभी बिल्ली आ गई, उसको छुपाना था तो कर दिया, पर वो बन गया एक रूल. तो सिमिलरली जस्ट फॉलोइंग सम रूल्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. लोग मंदिर में आते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, कोई कुछ ऐसे ऐसे करता है, कोई कुछ ऐसे ऐसे करता है, कुछ भी करते हैं. कोई जाके ऐसे करेगा तो कोई जाके ऐसे करेगा, तो कोई जाके आधा दंडवत मारेगा, कोई उल्टा मारेगा, कोई ये करेगा. तो नोबडी आस्क्स ये क्यों कर रहे हैं आप. नहीं, हमारे में ऐसा है, हमारे में वैसा है.
We are supposed to not follow such rules and regulations. We are supposed to always ask why. Why? So such rules and regulations not to be considered, right? Prajalpa Niyamagra Jana Sangha. Jana Sangha means association of non-devotees, association of all other kinds of people we should give up. Laulyam. Laulyam means greed, excessive greed, too much wanting material things. Why is that problematic for our spiritual life? Wanting too many material desires, wanting to fulfill them. Why is that bad for our spiritual life? Okay, we'll get attached. What else? Why is it bad? Bad hai bas. It is bad because then our attention will go there. अभी अगर simple life जीना है, you look like a very simple person. Simple life जीना है तो भक्ति के लिए समय होता है. If you want to lead a simple life, then we are not too much worried that I need so much money, I need so much facility, and then with money and facility comes prestige, and then you have to maintain your prestige, and then you will have those kind of people around you. फिर सडनली आप में अगर वैराग्य आ गया तो वो सब बोलेंगे अरे हमारे साथ मत रहो. फिर वो एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा. सो एंड फॉर व्हाट अल्टीमेटली यू वांट टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड. At the end of life, you want to leave everything behind. So, this is one big illusion which is detrimental to our devotional service. Prabhupada used to say simple living, high thinking. So, if we don't have such excessive desires, if we have limited, I will be happy with just this much. I need something to eat, I need something to wear, I need some place to stay, I need some money to take care of expenses or something I need to do, and that's it. I am not, the goal of my life is to serve Krishna. That is how I will be happy. I am this whole identity that I have made, that I am the doer and that I can enjoy through giving enjoyment to my senses, is wrong. I am getting enjoyment only if I give Krishna enjoyment. Only then I will be able to enjoy. And to give Krishna enjoyment, I don't need so many facilities. So that excessive greed is good if that greed is for devotional service. If that greed is for wanting to serve the Lord, wanting to serve devotees, wanting to do more Shravan Kirtan, wanting to go for, again and again to holy places and serve the devotees, that greed is good. Otherwise, greed is not good. So then Rupa Goswami gave 6 principles we should not do, and now he is going to give 6 principles that we should do. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्मषि नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Open to third verse.
We'll chant the verse. Utsaha nishtaya dhairyat. Utsaha nishtaya dhairyat. Tat karma pravartanat. Tat karma pravartanat. Sangatyagat sato vritte. Sangatyagat sato vritte. Shadbir bhakti prasidyati. Sadbir bhakti prasidyati. Utsaha nishtaya dhairyat. Tat karma pravartanat. Sangatyagat sato vritte. Shadbir bhakti prasidyati. There are 6 principles favorable to the execution of pure devotional service. First, being enthusiastic. 2, endeavoring with confidence. 3, being patient. 4th, acting according to the regulative principles such as Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, hearing, chanting, and remembering Krishna. 5, abandoning the association of non-devotees. And 6, following in the footsteps of the previous acharyas. These 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. These are very strong words. These 6 principles undoubtedly, without a doubt, कोई स्कोप ही नहीं है रॉन्ग होने का, undoubtedly assure, fully guarantee the complete success. देखो कितने सारे words हैं प्रभुपाद यूज कर रहे हैं. Undoubtedly, assure and complete. तीनों मतलब ये लाइफ में 100% डिवोशनल सर्विस हम प्राप्त कर सकते हैं. एंड एट द एंड ऑफ दिस लाइफ guaranteed going back home, back to Godhead. What we have to do? Just follow the 6 principles mentioned in this verse. None of the 6 principles mentioned here are very difficult. रूप गोस्वामी ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर पे उल्टा खड़े रह जाओ या हिमालय में जाके चड्डी में खड़े रहो और तपस्या करो या गर्मी में यज्ञ करके यज्ञ कुंड के एकदम बगल में जाके बैठ जाओ. राजस्थान में हो गई. ऐसे कुछ नहीं बोल रहे. ये नहीं बोल रहे कि निर्जल एकादशी के बाद निर्जल द्वादशी, निर्जल त्रयोदशी, निर्जल चतुर्दशी, निर्जल पूर्णिमा सब कुछ करो. नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं. ये नहीं बोल रहे जिंदगी भर फलाहार करो. नहीं, क्या बोल रहे हैं? enthusiastic. You be enthusiastic. उत्साह, निश्चय, have confidence, धैर्य, be patient. Be enthusiastic, have confidence, be patient. And then with these 3 things, what do? Follow the process of devotional service. Act according to regulative principles. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. ये 3 principles के साथ enthusiastically श्रवण करो, confidently श्रवण करो, patiently श्रवण करो. enthusiasm के साथ कीर्तन करो, confidently कीर्तन करो, patiently कीर्तन करो. All these 9 processes in these principles. And then देखो ये one cheese is repeated in both verses. Give up association of non-devotees. That's how important it is. Once when Mahaprabhu was asked, what is one sign that a person is a devotee? एक साइन बताइए जिससे पता हम देख के पता चले कि वो वैष्णव है. कोई सोचेगा तिलक लगा है, तो नहीं. उसने कंठी माला पहना है, नहीं. उसने बीट बैग पहना है, नहीं. ये 400 रुपए का धोती कुर्ता पहना, नहीं. शिखा रखा है, नहीं. क्या? असत संग त्याग ए वैष्णवाचार. Someone can give up non-devotee association, he is a Vaishnava. If someone is endeavoring, no, I will not associate with them. They are not devotees. They will destroy my devotion. That's a Vaishnava. So that's why Rupa Goswami is telling this twice. In the previous verse, when he's saying 6 things not to do, in that he's saying abandon.
6 things to do. उसमें भी one of the 6 things you have to do so that undoubtedly your assured complete success is give up association of non-devotees. And the last thing is associate with devotees. Follow the footsteps of the acharyas. Associate with devotees and then follow the footsteps of all the wonderful devotees who have come in the past, those great acharyas. And if we do these things, complete success is assured. It's like someone wants to cultivate a piece of land. उसको कुछ खेती करनी है. So he has to endeavor in that. खेती करने के लिए क्या करना पड़ता है? चलाना पड़ता है पहले तो जो भी वीड्स ये सब है उनको निकालना पड़ता है, फिर हल चलाना पड़ता है, सॉइल को एकदम प्रॉपर बनाना पड़ता है, फिर क्या करना है, सीड डालना है, उसके बाद क्या करना है, पानी डालना है और ध्यान रखना है. सो इसमें एंडेवर चाहिए, एंथुजियाज्म चाहिए, राइट. अ फार्मर कैन नॉट क्या है तो देखेंगे क्या ठीक है कुछ नहीं होगा. He has to be enthusiastic. Yes, I have 2 months before monsoon and now is the time, I will till the land nicely, I will do this, बारिश आएगी, चीज़ें होंगी. Enthusiasm. He also has to have confidence that ये process जो है ना ये काम करेगा. मुझे मेरा काम करना है, प्रोसेस अपना काम करेगा. वो उसको वहाँ बैठ के देखना नहीं है रोज, उग रहा है क्या, नहीं होगा तो क्या करेंगे, अरे यार उग नहीं रहा है, अरे पता नहीं है कि नहीं. You till the land properly, you put the right seeds, you put the right amount of water, allow sunlight to come, वो process will work. आपने सही सीड डाल दिया तो प्रोसेस काम करेगा. आपने बनाना का सीड डाला जो अच्छे क्वालिटी का सीड है तो बनाना प्लांट उगेगा, है ना. उसमें आपने करेला डाल दिया तो बनाना नहीं उगेगा, करेला उगेगा. पर आपको करेला चाहिए था, आपने करेला तो उगेगा, राइट. सो हैविंग कॉन्फिडेंस, निश्चय. एंड देन what is one more thing a farmer has to do? आज मैंने सीड डाल दिया तो कल तो नहीं उगने वाला, वो निकलेगा भी नहीं कल, इतना सा भी धरती के ऊपर कुछ नहीं आने वाला है, पर अंदर कुछ हो रहा है. As soon as I put a seed in soil, in fertile soil, and I put water, अंदर काम शुरू हो गया. Yes or yes? Right? It starts. Can we see it on day 1? No. Does that mean nothing is happening on day 1? No. Something is happening, right? And at the right time, suddenly वहाँ से कुछ दिखेगा, कुछ बाहर आ रहा है, and then in due course of time आपका पेड़ बन जाएगा या झाड़ बन जाएगा, and in due course of time वहाँ पे फल आएंगे या vegetables आएंगे, depending on whatever you have put. So what does a farmer have to be? Patient. He has to be patient, having confidence in the process, and in the beginning, yes, and throughout he has to be enthusiastic. So if any of these 3 things are not there, अगर स्टार्टिंग में उसने एंथुजियाज्म के साथ मेहनत नहीं किया तो नहीं होगा. अगर उसके अंदर वो फेथ नहीं है कि ये प्रोसेस का काम करेगा तो नहीं होगा. और अगर वो पेशेंट नहीं है, 4 दिन के बाद चलो निकालो, नहीं चला, नेक्स्ट डालो, निकालो, नहीं चला, नेक्स्ट डालो, इसकॉन ट्राई किया, नहीं चला, आर्ट ऑफ लिविंग गए, आर्ट ऑफ लिविंग ट्राई किया, नहीं किया तो ओशो जाएंगे, ओशो ट्राई करेंगे, सदगुरु जाएंगे, सब कुछ हो गया, वापस माया के पास जाएंगे, कुछ काम नहीं करता है. And be patient. So this you now take from the example of the farmer and you apply it in your own life. In spiritual life, we have to be confident. We have to have enthusiasm. We have to be enthusiastic that this process I will follow. Enthusiastically chant Hare Krishna. Enthusiastically read the scriptures. Enthusiastically perform devotional service. Second is be confident. Be confident that this process will work. Prabhupada gives the example of a woman who gets married. She knows that now I am married. In due course of time, a child will come. That
confidence is there that a child will come. But what does she have to do? Be patient. शादी के अगले दिन तो बच्चा नहीं आएगा, right? It takes time, so be patient. Third thing is be confident. Second thing, that you are in the right place and that आप लोग पे हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं. ये जो शास्त्र है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो 500 साल पहले बोला गया है. मतलब 500 साल से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं. जो भगवत गीता है और जो श्रीमद् भागवतम है वो 5000 साल से लोग फॉलो करते आ रहे हैं और उन सबके लाइफ में परिवर्तन आया है. All those people have come closer to God. So many of them have gone back to Godhead just by following these principles. That means these principles work. I should have that confidence that it will work on me also. If it's not working on me right now, there is something that I am doing wrong, that the process is not at fault. And then be patient. प्रभु जी मैं 6 महीने से जप कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. 6 महीने से कर रहा हूँ, और करो. प्रभु 2 साल हो गया है, अभी तक मेरा गुस्सा नहीं जा रहा है, अभी तक मटीरियल डिजायर्स हैं. पर वो 2 साल में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं? यस, आया है. ऐसा तो नहीं है ना जो हम डे 1 पे थे उतना ही है. 2 साल में काफी चेंजेस आए, हम सब देख सकते हैं. वी कैन ऑल एनालाइज आवरसेल्व्स. इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम 2 months, 6 months, 1 year, 2 years, we can all see from the time before we came to Krishna consciousness to now there are some changes in us. Yes. So the process is working. You have to be patient. For someone it may take 10 years, for someone it may take 15 years, for someone it may take 2 years for us to become more and more devotional. Be patient. So these 3 principles are very important. Utsaha, endeavoring with confidence. Nishchay, having confidence, having faith in the process. And dhairya, being patient. Now let's read Srila Prabhupada's purport. And for the next 15 minutes, we will just discuss what Prabhupada is saying. Devotional service is not a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. Its substance is practical activity. Sri Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrit Sindhu 1.1.11 has defined devotional service as follows. अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमम. उत्तम भक्ति or unalloyed devotion onto the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, involves the rendering of devotional service in a way that is favorable to the Lord. This devotional service should be free from any extraneous motive and devoid of fruitive karma, impersonal jnana, and all other selfish desires. So, in this first paragraph, Prabhupada is saying that devotional service is not a matter of sentimental speculation. That means it's a proper process. It's a science. It's not like that, हमारे में बिल्ली को शादी में बास्केट के अंदर रखते हैं तो चलते आ रहा है वो. ये हमारे में, आप में, मेरे हिसाब से. Prabhupada said, no one can say as per me, according to my understanding, I think. No, we don't think. We follow. We think, but we don't speculate. Right? What Krishna is saying, we think how to apply that, or we think and analyze and come to the conclusion that this is practical. And then we think of how to implement it in our life. But we are not trying to think, ये भी भगवान हो सकता है, वो भी भगवान हो सकता है, ये भी प्रोसेस हो सकता है. एकादशी में हम सिर्फ ये नहीं, हम तो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. Nothing like that. So, devotional service is a science. And anything which is a science requires principles. साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, हम पहले इस्टेब्लिश करते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है, फिर हम डिसाइड करते हैं हम कैसे मेथड फॉलो करेंगे, और इन द एंड एक कंक्लूजन होता है कि ये प्रूव हो गया या ये प्रूव नहीं हुआ, देयरफॉर इट इज नॉट देयर या इट इज देयर. So similarly, nectar of instruction is principles on how to achieve love of Krishna. Prabhupada goes on. Bhakti is a sort of cultivation. As soon as we say cultivation, we must refer to activity. Cultivation of spirituality does not mean sitting down idly for meditation, as some pseudo-yogis teach. Such idle meditation may be good for those who have no information of devotional service. And for this reason, it is sometimes recommended
as a way to check distracting material activities. Meditation means stopping all nonsensical activities, at least for the time being. Devotional service, however, not only puts an end to all nonsensical mundane activities but also engages one in meaningful devotional activities. So Prabhupada in the second paragraph says that devotional service does not just mean कि हम आए भगवान के फोटो के सामने खड़े बैठे हाथ जोड़ के स्माइल करके बस देखते रहे, बस वो भक्ति है। या खाली आके भगवान को दंडवत करके चले जाएं, वो भक्ति है नहीं। इट मीन्स एक्टिविटी। Devotion actually in the root cause means love. We'll say, no, a father is devoted to his, a person is devoted to his father. Yeah, father is devoted to his child. A mother is devoted to his, devotionally she takes care of his child, her child. So it means love. Now, devotional service means love for Krishna. Now, when a mother has love for her child, and if she just says, I love my child, I love my child, I love my child, but she's not doing anything for the child. हम सुबह अलार्म क्लॉक लगाते हैं, अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, गौर पूर्णिमा के दिन आप लोग सब होपफुली सुबह को आएंगे मंगल आरती। तो जब वो अलार्म बजता है ना 3:30 बजे, वो जैसे कोई न्यूक्लियर रिएक्टर में कभी कुछ डेंजर का वो अलार्म बजता है ना, वो वैसा साउंड करता है सुबह को नींद में। तो हम क्या करते हैं, अलार्म क्लॉक को टपली मारते हैं, स्नूज बटन होता है ना, स्नूज हो गया। जो छोटा बेबी होता है वो भी एक अलार्म क्लॉक की तरह रात को कभी भी बजने लगता है, होता है। वो टाइम पे उसकी माँ who has devotion for her child, loves her child, बच्चे को एटलीस्ट हमारे देश में अभी तक तो नहीं होता है, बाहर पता नहीं क्या, हमारे देश में आगे पता नहीं क्या होने वाला है, the way our culture is degrading. But when a genuine mother hears in the middle of the night her baby is crying, what does she do? She gets up, she takes the child in her lap, she feeds the child, and then she puts the child like this, उसको डकार दिलवाती है, फिर सो जाता है वो वापस, क्या चेक करती है कुछ डाइपर गीला है, कुछ सुसु कर दिया है, वो चेंज कर दिया उसको, फिर ऐसे ऐसे करके सुलाती है, राइट? लव मीन्स you do something for the person who you love. There is activity. It is not just lip service, I love, I love, I love. हम तो भगवान के बड़े भक्त हैं, क्या करते हैं? नहीं, हम तो अच्छे भक्त हैं। क्या करते हैं? कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान समझ जाते हैं हमारी भक्ति, हमें भक्ति जताना नहीं है, भक्ति अंदर है, वो उनके अंदर ही रहता है, वो क्या है अंदर वो भी नहीं समझ पा रहे, बाकी लोग भी नहीं समझ पाते। Here we are not saying we will go and announce I am such a nice devotee of Krishna. No. What is Prabhupada saying? Activity. So the fact that if you are taking some pamphlets and going out and telling some people that we have a center here, please come, that show, why are you bringing them here? To connect them to Krishna. That shows that you love Krishna. If you take a book and go out and are trying to show that book to somebody and telling them, requesting them, please take this book, that shows you have love for Krishna. If you after this program help to wind this up and sweep this floor because it is part of this temple, that shows you have love for Krishna. So activity has to be done. You distribute prasad or you help make prasad or you do some menial service also. ये पौधों में पानी डाल दिया क्योंकि ये पौधे मंदिर के अंदर हैं. That shows you have love for Krishna. So devotional service means activity. Love means doing something for the person you love. Prabhupada says the closest relationship of genuine love. There is only one person with whom we can have genuine love. That is Krishna. The closest in the material world, an example to genuine love is the love that a mother has for her child. Especially when the child is very small. So that is unconditional. So what does a mother do anytime, no matter how tired she is?
No matter how busy she is, when the child requires her, she is supposed to make herself available for the child, leaving and taking personal inconvenience. Similarly, as devotees of the Lord, as followers of Rupa Goswami, he is telling us that we have to be ready to do things for Krishna. Now, if Srila Prabhupada would have just decided to stay back in Vrindavan and just continued, he would have written in Vrindavan, Bhagavatam पूरा वहीं पे complete कर देते, कुछ publish करते, थोड़े बहुत copies यहाँ वहाँ बट जाती, and Prabhupada would have just chanted nicely. Nobody would have said anything. Everyone would have said, ठीक है, you know, Swamiji, the whole life he preached, and now that he is 70 years old, he has retired to Vrindavan. That's what everyone is supposed to do. Because whole life Prabhupada was preaching, distributing books, writing Bhagavad. But no, what did Prabhupada do? I will take all inconvenience. I will go to America and I will give the Americans Krishna. And then I'll give the Europeans Krishna, and then I'll give the Australians Krishna, I'll give the Africans Krishna, and then I will bring all these people back to India and show the Indians what they are forgotten. So taking all personal inconvenience, 2 heart attacks on the ship, going after he went to America, first 6 months, he did not know anybody. How was he surviving? वो जो 50 भागवतम फर्स्ट कैंटो लेके गए थे ना, वो यहाँ वहाँ जाके बेच रहे थे, उससे जो पैसे मिल रहे थे उससे प्रभुपाद ग्रेन्स और वेजिटेबल्स खरीद के खा रहे थे. एंड प्रभुपाद रीच्ड अमेरिका इन सितंबर. अमेरिका में अक्टूबर नवंबर के बाद विंटर आ जाता है, वहाँ पे तो बर्फ गिरती है, सोचो कितना ठंडा होता है. वन गुड थिंग अबाउट आवर मुंबई कल्याण दिस एरिया इज समर भी इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता, विंटर भी इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता. But in America, Prabhupada went to New York, and I'm not making this up, you can even do research. One devotee was saying that 1965 में जो विंटर आया था न्यूयॉर्क में, पिछले 100 साल में सबसे एक्सट्रीम विंटर था. And in that winter, Prabhupada is there alone. He could have thought that Krishna, through my guru, you gave me the order to preach to the Western people. I came here, I tried. Now it is too uncomfortable, I am going back. And when he would have come back to Vrindavan, everyone would have glorified him. वाह, ये पहला साधु है जो एक्चुअली अमेरिका होके आया, वैष्णव. विवेकानंद गए थे, वो अलग बात है. वैष्णव फर्स्ट कृष्णा भक्त who went there. No, he continued. He continued. Finally, the first recorded lecture of Srila Prabhupada is in March of 1966. जनवरी के बाद interested young boys and girls आने लगे programs में. And by March then this thing started. Monday, Wednesday, Friday Gita class. But from September till around January, Prabhupada was alone, struggling hard. Why? Because he loves Krishna. And when that love is there, you are ready to do any sacrifice for the person you love. Movies में देखते हैं हम, है ना, हिंदी मूवी जो टिपिकल रोमांटिक मूवी, कोई कुछ भी करने को तैयार है. बट वी नो दैट दैट्स नॉट ट्रू. वो तो हम समझ गए मूवी है. रियल लाइफ में हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है? कहीं ना कहीं जाके कोई अपना पर्सनल स्वार्थ के बारे में सोचेगा ही सोचेगा. Your girlfriend tells you that, yeah, you give me everything, whatever you have, अपने convince your parents, give me your prior. चलो, you're earning now, you have your own flat. मुझे अपना फ्लैट दे दो, मुझे अपना बैंक बैलेंस पूरा दे दो, और उसके बाद मैं जाके किसी और से शादी कर दूंगी. Someone has to be completely mad to agree to that, right? What will a person say? वो लास्ट वाला लाइन तू चेंज करके बोलेगी तू मेरे साथ रहेगी तो आई विल डू एवरीथिंग. उसमें भी कोई सोचेगा कि क्यों इतना सब क्यों मांग रही है. हाँ, तू यू कम, यू स्टे विथ मी, लेट द फ्लैट बी इन माई नेम, लेट्स गेट मैरिड, यू एंड आई विल लिव टुगेदर. चलो ठीक है, you want everything, okay, I'll give you, but get married to me. No, you give me everything and I'll get married to somebody else. No one is going to agree that. कहीं ना कहीं जाके at the end कुछ ना कुछ स्वार्थ तो आता ही है.
But a pure devotee in relation to Krishna, Krishna is telling him, you leave your comfort of Vrindavan, go to America. In that, Krishna sends 2 heart attacks. Ultimately, हम सुनते हैं ना, not a blade of grass can leave without the sanction of the Lord. इसका मतलब वो हार्ट अटैक कृष्णा ने सैंक्शन किया, एक नहीं दो, दो. और उसके बाद जब अमेरिका पहुंचाया, प्रभुपाद डजंट नो लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, कोई पता ही नहीं है किसी के बारे में. उसके ऊपर से 100 साल में सबसे एक्सट्रीम विंटर दिया. ये सब कृष्णा कर रहे हैं, राइट. गोवर्धन लीला हैज शोन अस दैट कोई भी डेमी गॉड कितना भी कुछ करे, अगर कृष्णा को कुछ अलग प्लान है तो वो ही होगा. इंद्रा दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है. ऐसा तो नहीं है ना इंद्रा स्नो दे रहा है और कृष्णा को अरे यार कृष्ण इंद्रा मत कर यार, इतना मेरा डिवोटी है. नहीं, कृष्णा सिंह हाँ ओके, दिखाओ कितना कर सकते हो, 100 साल से सबसे अच्छा विंटर दो. Prabhupada is continuing. He is not just thinking कि मुझे वापस जाना है. He is in fact trying to expand more and more. After a few years, Prabhupada, once one disciple asked Prabhupada, Srila Prabhupada, how was it in those initial few months before you met the devotees? Prabhupada said, if I tell you the struggle that I went through when I first came to America, you will faint. जो भी स्टार्टिंग के डिवोटीज थे ना, वो सब बोलते हैं, we never knew who Krishna is, till now we don't know who Krishna is. All we saw was Prabhupada's love. अभी अगर कोई कृष्णा को इतना प्रेम कर रहा है, hence proved कि Prabhupada is the pure devotee. If someone has so much love for Krishna, that transfers into compassion for everyone. Therefore, it is said that if a person becomes a perfect devotee, he has all good qualities. Automatically they come. So, they are saying that it is Prabhupada who, because of whom we started following. So, Prabhupada is continuously doing things and Krishna is giving obstacle after obstacle. चलो इसके बाद भी 1967 में चलो न्यूयॉर्क में सेंटर खुल गया, उसके बाद वापस एक स्ट्रोक आया प्रभुपाद को. One more stroke. It's continuing. He told the devotees, you pray to Krishna that our spiritual master has just started his mission. If you want to take him now, you can take him, but if you allow him to stay for a few more years, he can establish this movement nicely and make us better devotees. Prabhupada told the devotees to pray like that to Krishna. Not कि अरे कृष्णा what is your problem? क्यों ऐसे कर रहे हो, दिख नहीं रहा है इतना प्रभुपाद हमें भक्ति करा रहे हैं. So this is love. Love means doing something for the person you love. So bhakti means performing service for Krishna. In spite of whatever obstacles we may have, whatever bodily difficulties we may have, whatever mental obstacles we have, we should do it. So before we come to enthusiasm and confidence and patience, we have to understand that activity is required. Activity is a sign that you love somebody. It means that I will do something for Krishna. And that shows Krishna that, oh yeah, this person loves me. Till now, we love ourselves. We love ourselves. We love our body. We do so many things for our body, for ourselves. Right? Now, we have come to Krishna consciousness, means we have to do activity for Krishna. And now Prabhupada says, what kind of activity? Prabhupada quotes Prahlad Maharaj, Shramanam Kirtanam Vishnu, Smaranam Pada Sevanam, Marshanam Vandanam Dasyam, Sakhyam Atmani Vedanam. The 9 processes of devotional service are as follows: hearing the name and glories of the Supreme Personality of Godhead, chanting His glories, remembering the Lord, serving the Lord's feet, worshipping the deity, offering obeisances unto the Lord, acting as the Lord's servant, making friends with the Lord, surrendering oneself fully to the Lord. Shravanam or hearing is the first step in acquiring transcendental knowledge.
One should not give oral reception to unauthorized persons, but should approach the proper person as recommended in Bhagavad Gita 4:34. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadeshanti te jnanam jnaninas tattva darshana. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively, and render service unto him. The self realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. So Srila Prabhupada is saying activity karna hai, and then he's saying what are the activities. These 9 processes of devotional service. We have to be active in our love for Krishna through these 9 ways. Starting with Shravan, the most important. And Shravan from whom Prabhupada is saying? From a bona fide representative of Krishna. From someone in the parampara. Not hearing from any random person. In India, any random person has an opinion on God. वो ठेला वाले के पास भी ओपिनियन है, पान वाले के पास भी ओपिनियन है, लोकल ट्रेन में लोगों के पास ओपिनियन है. We are not worried about those opinions. Whose opinion matters to us? The acharyas, the devotees, the acharyas, the predecessor acharyas in the parampara. And for that Prabhupada is saying the way to follow them is this: Tadvidhi pranipatena pariprashnena and sevaya. Humbly approach, humbly inquire, and then serve. And in this way, we can understand from the devotees how we can serve Krishna, and then using these 9 ways, we have to be active in service. And that shows love. That shows love for Krishna. What's the time? How much? Okay. Any questions? Any questions on anything we discussed? Clear hai? No questions? Yes, Mahaprabhu. Till Gaur Purnima drama, we will call you Mahaprabhu. Then we'll call you a name again. Similarly, we should not do similarly for Jagai Madai. उनको उनके नाम से ही बुलाओ. Yes. Hmm. The best way to, first of all, we should understand what does it mean to give up bad association. Because unless you join the temple, serve in the ashram, you can take some, चलो 1 साल में आश्रम में ज्वाइन करके ट्राई करके देता हूँ. Unless we do that, as long as we are living in the world, there will always be association of non-devotees that we have to do. If you are living at home, if you are going to college, या you are working, there will be people who you associate with who are not devotees. सब तो डिवोटी है नहीं. अभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम उनके साथ बिल्कुल एसोसिएट नहीं कर सकते हैं. बिकॉज देन how will I work, how will I go to college? It's not possible. So asat sang tyag means it's not as if not to physically associate. So for example, if you're working, now you have a colleague, now you have to, your process is such that there has to be interaction with that colleague. Or you have your boss, you have to interact with him. You will not say, sir नहीं आप तो डिवोटी नहीं है तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा. मुझे खाली आप ईमेल्स पे बताते रहो क्या काम करना है, मैं करते रहूँगा, और पर मैं आपसे बात नहीं करूँगा. थोड़ा दूर रहिए, मुझे एसोसिएट नहीं करना है आपसे. Not like that. What it means is associate with them as much as is essentially required. Now you don't have to go and start taking life lessons from your boss or your colleague. You don't have to tell them मेरा weekend कैसा था, आपका weekend कैसा था, क्या किया आपने, या आपके लाइफ में प्लान्स क्या हैं, मेरे को थोड़ा मन डिस्टर्ब कर रहा है, कैन यू हेल्प मी. ऑल दोज कॉन्वर्जेशंस वी डोंट. वी विल टॉक टू देम अबाउट वर्क. ये रिपोर्ट आया, ये डेडलाइन है, इसका ये काम करना है, मैं इतना करूँगा, इसको इतना डेलीगेट कर रहा हूँ, ये करना है, ये इतना अचीव करना है, 31 मार्च तो डेडलाइन है, जो भी वॉट एवर वी विल,
या नेक्स्ट मंथ का ये प्लानिंग है, ये एग्जीक्यूशन है, ये दैट इज नॉट असत्संग. बट it is very normal that even in a work scenario people will do time pass talks. अरे वो मैच देखा क्या, अरे वो मूवी देखा क्या, अरे कौन जीतेगा इलेक्शन, all those things में we can excuse ourselves. So then that association with those colleagues or with your college students is not called asatsang. Similarly with family members. Now we cannot tell just because our family, some people, maybe our parents, yeah, our brothers, sister, they may not be devotees. They cannot tell them I'll not associate with you. But I should not get too deeply engrossed in the conversation with them. Now with colleagues and with friends, what I said is possible. But with family, it is more difficult. Because with family, तो ये सभी तो talks होने वाले हैं ना. So how will you avoid them? So therefore, the thing which is even more important than avoiding non-devotee association is having strong association of devotees. So when I have that strong association of devotees, then even the impact of the mundane talks of the family members will not have a big impact. Because ultimately, they are my family. वो लोग का काम है बोलना, ठीक है, वो लोग का हक है बोलना, अधिकार है उनका मेरे ऊपर, बिकॉज आई एम इन देयर फैमिली. सो I don't have to take it very seriously, but I don't have to show them also that I'm disrespecting them. I should respect them. Genuinely, I should respect them. But I should not take their talks very seriously. This will happen when I am nicely spiritually inspired in good association. So to give up something, if I get something better, it's easier to give up. Otherwise, if I just read the books and I don't have any devotee friends, if I don't have a devotee superior to me, I don't have devotees equal friendly to me, and if I'm reading the books that's saying Asat Sang Tyag, and even if I try, I will not be successful, because ultimately a human being is a social person. Right? We are all social beings, and social beings require interaction, require people to talk to, require us to share our mind with someone, require us to have some conversations. So therefore, having strong association of devotees is the most important principle. And the second most important principle is keep the association of the others just limited to whatever is essential and not more than that. Now when it comes to friends who are, suppose we have grown up with them, 10-15 साल से हमारे friends है, बचपन से हमारे friends है, बहुत कठिन हो जाता है, it's very difficult. So if they are your genuine friends, then you can tell them what you are doing, and you can encourage them also to come. And if at that time they express reservation but they are encouraging you, you should understand, ठीक है, ये सच में friend है, ठीक है, he doesn't want to do, no problem, but he is not telling me तू पागल हो गया क्या, या ये क्या है, पागल है मत कर, या दूसरों के सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, देखो बाबा जी आ गए, वो सब साधु महात्मा आ गए, साधु जी हम आपके सामने चिकन खा सकते हैं क्या, ऑल दैट टाइम पास टॉक्स पीपल डू ना, मजाक उड़ाने के लिए. If that is not there, then you can know, हाँ ठीक है, ये genuine friend है. Like I have 2-3 people like that. They were my school friends, we were in college together, they are still in touch with me. 2. सोचो कितने होते हैं स्कूल में फ्रेंड्स, कितने 50-60 फ्रेंड होते हैं, कॉलेज में उससे भी ज़्यादा होते हैं, अभी 2-3 बचे हैं, who don't want to practice but are very respectful towards my choice, and in fact they are appreciative also. And all the others, you should understand, they were not actually my friends. The fact that they are now making fun of this or they are trying to rescue me from this, बचाओ उसको, कहाँ पड़ गया ये हरे कृष्णा लोगों के बातों में, you should know they are actually not my friends. And then if you genuinely value devotional service, if you genuinely value Krishna, then you should just give them up. There's no two ways around it. You have to give them up. So बैंडेड कट करके निकालते हैं,
इट्स द ईजीएस्ट वे टू रिमूव अ बैंडेड. आस्ते 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 करोगे, ट्राई करोगे, बहुत ज़्यादा दुखेगा और फिर घमोरी भी हो जाएगी. कट करके निकालो, 2 सेकंड दुखेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा. जस्ट गिव देम अप, block them, delete them, do whatever you have to. So 3 things. Most important, strong association of devotees. Second, whatever is necessary in terms of non-devotees, उतना उनके साथ associate करो. Third, with friends, अगर कोई सपोर्टिव है, जेन्युइन है, तो ठीक है, वो मेरा दोस्त है. बाकी सब लोग आई हैव टू गिव देम अप. नोबडी इज एन एक्सेप्शन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन. ऐसा नहीं हाँ बाकी सब के लिए ठीक है पर मेरे दोस्त अलग हैं. नहीं, वो असत्संग है, वो आपके दोस्त उसमें इंक्लूडेड है अगर वो ऐसे है तो. फैमिली को हम गिव अप नहीं कर सकते हैं. फैमिली को हमें, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, दैट विथ योर फैमिली यू बिहेव वेरी नाइसली विद देम, बट योर प्रायोरिटी शुड बी सर्विंग द लॉर्ड. योर गोल शुड बी क्लियर टू सर्व द लॉर्ड, बट यू डोंट हैव टू व्हेन यू गो होम fanatically behave like that with your family. You can be normal with them, you can be respectful to them, and ultimately by serving the Lord your family is getting the main benefit, ultimate benefit they are getting. Because if a person in the family, especially for parents, if their child performs devotional service, the parents get the benefit even if they are not performing devotional service. So in that way we should be very confident that even if I am going against the wishes of my family, it is for their good. It's like a child, when the parent goes against their wishes and doesn't buy them some toy which they know is not good for him. या रात को सर्दी के मौसम में बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है, मम्मी बोलती है बिल्कुल भी नहीं. बच्चा बोलता है ये तुम्हारा प्रेम मेरे लिए, बट वो प्रेम है, वो बच्चे को समझ नहीं है उसकी. एग्जाम के पहले उसको चाहिए नीचे जाके क्रिकेट खेलूँ, माता पिता उसका क्रिकेट बैट बॉल सब छुपा देते हैं. पढ़ाई कर, रूम के अंदर अपने आप को बच्चे के साथ लॉक कर देते हैं. पढ़ाई कर, अभी कहाँ जाएगा तू. विंडो बंद कर देते हैं, नहीं तो नीचे से वो बच्चा चिल्ला रहे हैं चिंटू आ रहा है क्या क्रिकेट खेलो, तो चुप तू भी जाके पढ़ाई कर, निकल यहाँ से. वो चिंटू को भी भगा देते हैं. किसके लिए? उसके भले के लिए और चिंटू के भले के लिए भी. तो अभी रोल रिवर्स हो गया. हमारे माता पिता समझ नहीं पा रहे हैं कि रियल गोल ऑफ लाइफ का क्या है. भक्तों की कृपा से हमें कुछ मालूम पड़ गया. So our parents may not understand, but that does not mean we have to just follow whatever they are saying. We have to be respectful to them. At the same time, we have to perform this devotional service, knowing very well that it will be ultimately for their benefit also, and there will be a time where they will appreciate it. There will be a time where they'll think, हाँ बेटा 20 साल पहले I was forcing you to get that career. अभी वो तेरे फ्रेंड्स जो वो करियर में मैं देख रहा हूँ वो लोग का क्या हाल है. एंड आई एम सीइंग यू चोज अ सिंपलर वे एंड सी हाउ नाइस यू आर हैप्पी, यू आर विदाउट वाइज. मैं छाती चौड़ा करके चल सकता हूँ कि देखो मेरा बेटा इतना अच्छा भक्त है. दे विल रियलाइज इट मे बी इन देयर ओल्ड एज. टिल देन वो छुप छुप के चलते होंगे, इसका बेटा इतना कमा रहा है, मेरा बेटा देख क्या कर रहा है, हरे कृष्णा हरे राम बोल रहा है. But later they will understand. So with family we are supposed to just be respectful to them, tolerate them, and with certain friends then we are just supposed to give them up. And this is applicable for everybody. Okay? Answers your question. Any other question? Yes, Kunal Prabhu. So one second, just so next Wednesday, whoever continues this,